वेलकम टू एक उम्मीद हेल्प चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस एक उम्मीद हेल्प नए चैनल के नए वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा एंड हडूप। हम लोग बिग डेटा एंड हडूप स्क्रैच लेवल से डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल तक। You guys can say it's a one point discussion forum about big data and Hadoop from scratch level to advanced level. If you have any question, if you want any advice, आप लोग कमेंट में अपना एडवाइस और अपना क्वेश्चन लिखिए। वी विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर। We are a bunch of guys in Ek Umeed Help channel. We are working with different technology in current industry scenario. So we will give you the best advice. We will give you the best answer of your question about big data and Hadoop and many more different programming language. So today we are going to discuss about a very important टेक्नोलॉजी विच इज़ जो मार्केट में अभी आया हुआ है एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ गाइज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिग डेटा एंड हडूप। In this particular video we are going to talk about what is बिग डेटा, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिग डेटा है क्या, एंड सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और वी कैन ऑल्सो से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डेटा कौन कौन सा डेटा है जो बिग डेटा के पैरामीटर में फॉलो होता है। दिस इज द सेकेंड टॉपिक, एंड थर्ड टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस इज some examples of big data. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिग डेटा क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे और कुछ बिग डेटा के एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज बिग डेटा। गाइस, बिग डेटा इज नथिंग but a huge volume of data that cannot be stored and processed using ट्रेडिशनल सिस्टम। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है और हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि बिग डेटा होता क्या है। बिग डेटा इज नथिंग but it's a huge volume of data that cannot be stored and processed using traditional system. This is a complete definition of big data. Big data, come on once again, big data is a huge volume of data that cannot, it's very important, that cannot be stored and processed using traditional system. Okay. Now we can see different types of data. Data may be in gigabyte of data. You can heard a lot of thing about gigabyte, right? Also terabyte of data, also petabyte of data, that is PB, petabyte of data. एंड इन कमिंग वीडियोस वी विल सी, हम लोग देखेंगे कि कैसे इन गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट डेटा को हम लोग स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग बिग डेटा एंड हडूप टेक्नोलॉजी, राइट? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। वी कैन ऑल्सो से एक्सा डेटा ऑल्सो, एक्साबाइट ऑफ डेटा ऑल्सो। दीज आर द डेटास। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ big data, and the example of big data is very important to understand the concept of big data. Example of big data is, आप email का example लो। On email, if you have to transfer an amount of data, then you are restricted
टू ओनली टू 25 MB ऑफ डेटा। मीन्स आप ईमेल के द्वारा 25 MB का डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। You can only transfer 25 MB of data over the email. That is a restriction. So the question is, what if you got 26 MB of data or 27 MB of data or 40 MB of data? अगर आपके पास 26 MB, 27 MB, 40 MB का डेटा आ गया तो आप क्या करोगे? So this 26 MB or 27 MB or 40 MB or 50 MB data is nothing but a big data with respect to email. So if you are talking in terms of email, then this particular 26 MB or 27 MB or 40 MB or 50 MB or 30 MB of data is a big data with respect to email. So हम लोग definition के through चलते हैं, right? So this 26 MB of data or 27 MB of data which cannot be stored and processed using the email is what? A big data. So this 26 MB of data or 27 MB of data we cannot process, right, over the email. So this is a big data. Now we can see the second example. The second example is कि what if मैं अगर आपको 1 टेराबाइट का एक इमेज दे दूं और मैं बोलूं कि आप अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से इसको प्रोसेस करो, एंड ट्रेडिशनल सिस्टम यू कैन से योर ऑन लैपटॉप. So if I give you 1 terabyte of data, 1 terabyte of one image, and I want some certain processing से मतलब है कि आप इसको एडिट कर दो या इन्हांस कर दो या साइज रिसाइज कर दो, तो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम जो आपका लैपटॉप है इट कैन नॉट डू. एंड अगर ये कर भी सकता है तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. सो दिस 1 terabyte of data is big data with respect to your on laptop. So big data 26 MB का डेटा भी बिग डेटा हो सकता है with respect to email. So big data का ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है कि कितने MB का डेटा होना चाहिए, कितने GB का डेटा होना चाहिए, कितना टेराबाइट का डेटा होना चाहिए, ये कोई नेसेसरी नहीं है. So big data could be anything, and the basic example is कि 26 MB of data or 27 MB of data is also a big data but with respect to email. This 1 terabyte of image is big data. This 1 terabyte of image is also a big data with respect to your traditional system. So we will see some real-time example of it. Real-time examples, and the best example is YouTube. Every minute in YouTube 60 मिनट का वीडियो अपलोड होता है हर एक मिनट. So you can imagine how huge volume of data they are getting every minute. Facebook, every minute some certain terabyte of data they receive to process. आप अपने Facebook पे कोई अपलोड पिक्चर को अपलोड करते हो और तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए, तुरंत आपको चाहिए, right? So imagine how they can process. So we will also see how we can process this huge volume of data, right? So I hope you can clear with what is big data. So big data, again I am telling you, big data is nothing but say huge volume of data that cannot be stored and processed using traditional system. And also you can add using traditional system which cannot be stored and processed using traditional system within given time frame. So the best definition is huge volume. Big data is a huge volume of data that cannot be stored and processed using traditional system within given time frame. And the different type of data is gigabyte, terabyte, petabyte. And the example of big data is, you can say email part. You cannot process more than 25 MB of data, or
transfer over the email. So this 26 MB of data or 27 MB of data is a big data with respect to email. 1 terabyte of image you cannot process through your traditional system, your own laptop. So this 1 terabyte data is a big data. And the real-time example are YouTube, Facebook, Twitter, and you can take airline or anything, right? So in next videos we are going to discuss about classification of big data. We will see some classification of big data, and that with examples. And second part we are going to cover is characteristics of big data. Characteristics of big data, and that too we will see with example. Okay, so still stay tuned for my next videos. Please like and subscribe, and if you have any question, anything, any doubt, please comment it out. We will back with the best answer. Thank you for watching these videos.